Okay, sorry, yeah. Okay, I will give you again today that the same one, okay? Not same one, I will change that. Okay, I will delete it. Okay. Okay, ठीक है. So all are ready for the class? Yes, ma'am. But बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं. 1 more minute हम वेट करेंगे, then we'll begin the class, है ना? ये चैप्टर तो भूस वाला. Yes, what happened, Aman? मैम जो आपने गूगल क्लासरूम में भेजा है. That is by mistake it went in your class. Actually वो 7th के लिए मैं डालने वाली थी ना, but by mistake it went to your class. Sorry, today I will send you that another one, okay? I will change Yes, it. ma'am. हाँ, ठीक है. तो क्लास स्टार्ट करें बेटा? Shall we start the class? ठीक है. I will give. If I give you the question today, also you have to submit up to 2 days only. है ना? Today, tomorrow you will write that. Then on Sunday you have to submit it. Okay? मैम उसमें मैम हम डाल दें तो Fine? वो डल आता है मैम. हम कल डालेंगे तो. हाँ. ठीक है. लेट दिखाता है ना? Yes. Okay, so let's begin the class. है ना? Yes, part 3 today we will read it. Do you remember in part 1, part 2 what happened to that child? Yes? Yes, ma'am. याद है किसी Good को? afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. So, part 3 today we will study part 3. So all of you please pay attention. Part Can you see this screen? Yes, ma'am. Okay. So we will read this part 3. My voice is clear. Can you hear me properly? Yes. Yes, ma'am. HD sound. Yes. आवाज नहीं आएगी तो बोलना ना. ठीक है. Part 3. Remorseful and scared, he prays to God for monetary help. He makes matters look normal, but prayers harder than ever. The inevitable happens, though somewhere along the way he notices the divide between the uh, fanciful and the factual. So you will see in this, on the way he will pray to Alamia God harder than before. मतलब वो मतलब बहुत बार बार वो अल्लाह का नाम लेते ही वो प्रे करेंगे. एंड ही वांटेड मनी, है ना, monetary. He wanted to have 4 rupees because he had already uh, in he had spent that money to buy दिस जिलेबी, है ना, क्रिस्पी जिलेबी में अपना जितने भी 4 रुपीस था वो स्पेंड कर दिया है. देयर वाज अ शेड गिविंग. किसी का माइक ऑन है बेटा? ऑफ कर लो प्लीज. ऑफ कर लो, ऑफ कर लो. माइक ऑन है बच्चे, प्लीज ऑफ कर लो अपना माइक. ऑल ऑफ यू अपना अपना माइक ऑफ करके बैठना बच्चे, ऑल ऑफ यू प्लीज. So this boy had spent all the monies in buying jalebis, है ना.
There was a shade given trees beside the railway tracks. I sat under it and wondered whether there would possibly be a more unfortunate child than me in this world. वो जाते जाते now he is tired. Walking, he is tired now. So he was sitting under the tree and thinking. What he is thinking? Maybe I am the worst person in this world. No child is like me. And he is मतलब regretting now कि कोई भी मेरे जैसे बच्चे इस दुनिया में नहीं होंगे, because they don't spend money by to eat jalebi with their school fee money. Only I am the person who has spent all the money in buying that hot crispy jalebis. When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed too simple and straightforward. Eat jalebis with the fees money and then pay the fees with the scholarship money. एक्चुअली ये हैपेंड हुआ है क्योंकि ये जो स्कूल फी मनी जो था, दे टेम्पटेड, उन लोग इनको टेम्पटेशन दिए कि वो उस स्कूल फी के वजह से स्कूल फी जगह पे वो स्कॉलरशिप जब मिलेगा उस पैसे को वो स्कूल फी भरेंगे। एंड वट एवर ही हैज़ मनी, जो भी पैसे उनके हाथ में है उनसे ये क्या करेंगे, जलेबी खरीद कर खाएंगे। यही टेम्पटेशन उनको हुआ, तभी ये अपना 4 रुपीज़ को स्पेंड कर दिया। I thought that 2 and 2 added up to 4 and could never be 5. और इनको पता था कि 2 + 2 is equal to 4, not 5. सो ये सोचा था कि स्कॉलरशिप मनी से वो अपना स्कूल फी भरेंगे और स्कूल फी जो देने के लिए उनके पेरेंट्स दिए थे उनसे ये जलेबी खाएंगे, है ना। सो ही सेज दैट ही थिंक्स कि 2 एंड 2 एडेड हो जाता है तो 4 होता है, कभी वो 5 नहीं होता। How was I to know that sometimes it added up to 5 as well? Had I known that I would get the scholarship the next month. लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि को इस मंथ स्कूल फी के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ऑन नेक्स्ट मंथ आई कैन गेट, आई वुड हैव postponed my jalebis eating program to the next month as well. यदि मुझे पता तो इस मंथ मैं जलेबी खाता। आई बीन ईटन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मैं जलेबी खरीद कर खा लेता, इस मंथ मैं नहीं खाता, है ना। आई बीन ईटन दिस मंथ climb a climbing in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station. Sitting under the tree, I felt like crying. So he is sitting alone at the railway station, shade of the tree, है ना। वो एक पेड़ के नीचे बैठा है छांव पे, है ना। एंड ही इज थिंकिंग कि मेरे से बुरा तो कोई बच्चा इस हो सकता है, बिकॉज आई हैव स्पेंड दिस मनी to buy jalebi and I have finished all the to the school fees. So now is thinking that I would have my जलेबी। यदि मुझे पता होता कि नेक्स्ट मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा, इस मंथ नहीं मिलने वाला है, तो मैं उस जलेबी खाने को वो पोस्टपोन कर प्रोग्राम जो बनाया था उस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर देता। नाउ फॉर द टाइम ऑफ ईटिंग अ few jalebis for the first time in my life, I was absent from school. वो बोलता है कि शायद पहली बार मैं जलेबी खाने के वजह से मैं स्कूल में एब्सेंट हो गया। अदरवाइज स्टूडेंट
कभी मैं absent नहीं होता था, हमेशा मैं स्कूल में present हुआ करता था. Now, because of this jalebi, only I was absent that day and couching in the shade of a tree in a desert corner of the railway station. इसीलिए मुझे ये रेलवे स्टेशन में अभी बैठना पड़ रहा है. यदि मैं नहीं खाता, I would have not spent that money on jalebi. I would have not sat here. वो सोचता है कि दिन को देखने को मुझे नहीं मिला होता. I have done mistake. Sitting there under the tree, at first I felt like crying. फिर वो सोचते-सोचते उनकी आँखों में आँसू आने लग गया कि what mistake I have done. है ना? बहुत एक बड़ी गलतियाँ करके रखा है मैंने. I have done mistake. I have spent all the monies on jalebi and I have no money now to pay the fees. So I have done great mistake here. So he is sitting under the tree and thinking all this. Before eating jalebi, he could not think all this. After eating those attractive jalebis, now he is thinking, now he has no money in his pocket to pay the school fees. That is why now he is upset and he is thinking over. Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding was not tears but drops of jalebi syrup. तो ये बोलता है कि कभी-कभी तो मुझे हँसी आने लग रहा था. आई वाज़ फीलिंग लाइक लाफिंग, मुझे हँसी आ रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो आँसू जो है वो ऐसा लग रहा था कि वो जलेबी का सिरप है. वो जलेबी का वो रस होता है वो है जैसा लग रहा था. इसीलिए मेरे को जब सोच रहा था जलेबी के बारे में एंड रो-रो के सोच रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जलेबी का रस मेरे आँखों से बह रही है. फ्रॉम द जलेबीज़ माय थॉट्स वेंट टू द फीस and from fees to Master Ghulam Muhammad's can, and from his can I canny I thought of God. I closed my eyes and began to pray. तो ये बोलते हैं कि जलेबी जब सोचे तो जलेबी को जब सोचते हैं कि तुरंत उनको स्कूल फीस के बारे याद आ जाती है. स्कूल फी के बारे याद आने के बाद वो मास्टर गुलाम को सोचने लग जाते हैं, वो कैसे पनिशमेंट देते थे और वो फीस कलेक्ट करते थे, है ना? एंड जब गुलाम को सोचते हैं तो डर लग जाता है ना? ही वाज़ फ्राइटेंड सो ही क्लोज्ड हिज आईज़ एंड ही स्टार्टेड टू प्रे टू गॉड. ही बिगैन टू प्रे टू गॉड फॉर द हेल्प. कोई पढ़ोगे बेटा? यस? May I? हाँ, पढ़ो. अलामिया. From Alamia. Okay. Alamia, हाँ. I'm a very good boy. I have memorized the entire namaz. Uh, I even know the last 10 surahs of the Quran by heart. If you wish, I can recite the entire Ayat al-Kursi for you just now. The need of your devoted servant is only the fees money that I ate the jalebis with. So, alright, I admit I made a mistake. I didn't eat them all by myself, though I fed them to a whole lot of children too. But yes, it was a mistake. If I had known that scholarship money would be given next month, I would neither have eaten them nor fed them to others. Now you do one thing. Just put 4 rupees in my bag. If there is a paisa more than 4 rupees, I will be very displeased with you. I promise. If I ever eat sweet with my fees money again, then let the thief's punishment be my punishment. So Allah Mia, just this once help me out. There is no shortage of anything in your treasury. Even our even our chaprasi take a whole load of money home every month. And Allah ji, after all, I'm a nephew of a big officer. Won't you give me just 4 rupees? Okay, wait. Huh?
Alamia, I am a very good boy. I have memorized the entire namaz. Now he started praying to God, Almighty God, Alamia, Almighty God, and he is saying that I am a very good boy. As you know, I am very obedient and very good boy. I have memorized, मैं बहुत अच्छा से याद किया है क्या चीज, एंटायर कुरान, नमाज जो पढ़ते हैं ना नमाज, सो वहाँ जितने भी प्रेयर होता है सब कुछ मुझे याद है. आई एम ए वेरी गुड बॉय. आई एम वेरी इनोसेंट. I even know that last 10 surahs of the Quran by heart. So जो कुरान में लिखा हुआ होता है सारे चीज को मैं बिल्कुल याद कर चुका है. If you wish, I can recite the entire Ayat al-Kushi for you just now. यदि आप चाहते हो कि मुझे याद है या नहीं ये टेस्ट करने चाहते हो तो मैं पूरे के पूरे जो कुरान में लिखा हुआ है सारी चीज को मैं अभी जो भी लिखा है उसको रिसाइट करूंगा विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी प्रॉब्लम. The need of your devoted servant is only the fees money that I ate the jalebis with. So all right, I admit I made a mistake. So ये बोलते हैं कि मैं एक ही गलती किया है, मेरे से एक ही गलतियाँ हुआ है जो कि मैं स्कूल फी मनी देना था उस मनी से मैं अपना जलेबी खा लिया. Because that jalebi was very attractive, that's why I have eaten and I have done that mistake. I agree with that. I admit my mistake. I apologize from you that I have done mistake. I didn't eat them by all by myself, though I fed them to a whole lot of children too. But yes, it was a mistake. तो ये बोलते हैं कि आई हैव डन दैट मिस्टेक बट आई हैव नॉट ईटन अलोन. मैं अकेला नहीं खाया है. आई हैव फेड द चिल्ड्रन ऑल्सो इन द चबूतरा. है ना, चबूतरा में बच्चों को भी मैं खिलाया है. एंड इट वॉज माई मिस्टेक. इट वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम माई साइड दैट आई हैव spent that fees money. Instead of paying the school fee, I have purchased jalebis and have eaten. If I had known the scholarship money would be given next month, I would neither have eaten them for nor fed them to the others. यदि मैं आपको यदि मुझे पता होता कि क्या है this scholarship money would have been Hello. Yes, can you hear me, bete? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Wait. Okay. Fine. Yes. Here.
So you know that that boy is now he is regretting, and he is telling that Alamia that if you wish, I will recite all the uh, prayers, whatever it is written in the Quran. So I am a very good boy, so Alamia, please help me out. I have done mistake, that I have already admitted. I have admitted that I have done mistake, and that mistake is only I have spent that money, school fee money, on jalebi. So please forgive me and help me out how to overcome from this mistake, and I have to answer this, how I have to go to my parents. If they ask me, what shall I say? So please help me out. But yes, as you know that I have not eaten alone. मैं अकेला इस जलेबी खाया नहीं है. I have given to the student, to the children uh, in the village, and I have distributed everyone in that chabutra place. I would neither have eaten them or fed them to the others. यहाँ बोलता है कि if I would have been known, यदि मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप मनी इस मंथ नहीं मिलने वाला है, नेक्स्ट मंथ मिलने वाला है, तो मैं क्या करता? I would have been not eaten this month. I would have been not eaten the jalebi this month. I would have been postponed that also. But I did not know that scholarship money we will not get to this month. I would neither have eaten them or fed them to others. Now you do one thing. Just put 4 rupees in my bag. If there is paisa more than 4 rupees, I will be very displeased with you. I promise, if I ever eat sweets with my fees money again, then let me this punishment be my punishment. तो ये बोलते हैं कि प्लीज गॉड हेल्प मी आउट एंड यू पुट 4 रुपीज इन माई बैग. मेरी बैग में 4 रुपीज डाल दो. यदि वहां पे 4 रुपीज से एक्स्ट्रा भी है तो मैं उसको आपको वापस कर दूंगा. बट प्लीज हेल्प मी. और क्या है ना, आई विल नेवर डू दैट अगेन. मैं कभी उस चीज को वापस रिपीट नहीं करूंगा. प्लीज गॉड मेरे ऊपर थोड़ा सा मतलब काइंडनेस दिखाओ, मुझे दया दिखाओ, रहम करो. यस, करेक्ट. सो ये जो है वो भगवान से बहुत प्लीड कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना, मतलब बहुत वो ही इज सीकिंग फ्रॉम गॉड, ही इज आस्किंग हेल्प फ्रॉम गॉड कि इफ आई एवर ईट स्वीट्स विथ माय फीस मनी अगेन. तो क्या बोलते हैं, यदि मैं फीस मनी से फिर से अपना अट्रैक्टिव जलेबी खाऊंगा तो यू विल गिव मी द पनिशमेंट जो कि थीफ को दिया जाता है. जो चोर और डाकू जो होते हैं उनको जो पनिशमेंट दिया होता है देते हैं, उसी पनिशमेंट मुझे भी दे देना. इफ आई डू द सेम मिस्टेक अगेन, यदि मैं सेम मिस्टेक करूंगा तो मुझे आप पनिशमेंट दे सकते हो. सो अलामिया, just this once, help me out. There is no storage of anything in your treasury. Even our chaprasi takes a whole lot of money home every month. आपको पता है कि ये दिस चाइल्ड इज टेलिंग दैट यू नो दैट गॉड वी आर वेल टू डू, एंड यू नो आवर chaprasi also gets lots of money. He gets lots of money from our home because we are well to do from. Our family is not very poor, but I have done mistake. That's why I am pleading you that you should or you can kindly put 4 rupees in my bag and I can pay that money in the school as a school fee. Even our chaprasi takes a whole lot of money home every month. And Allaji, after all, I am the nephew of a big officer. Now he says that कि आप मेरे ऊपर रहम कीजिए. यू नो दैट मैं एक बिग ऑफिसर का नेव्यू हूँ. तो आप तो जानते ही हो कि ऑफिसर के नेव्यू होते होने के नाते आई एम ए वेरी गुड बॉय. नाउ यू कैन trust me
that I will never do again that same mistake. I am the nephew of a big officer. Won't you give me just 4 rupees? क्या आप मुझे 4 रुपीज नहीं दे सकते हो? मैं तो एक क्या है बिग ऑफिसर का नेव्यू हूँ. सो काइंडली प्लीज गिव मी 4 रुपीज. After the prayer, I offered namaz, recited 10 surahs, ayat al-kursi, kalma Tayab. In fact, everything that I remembered. Then I blew over my back, saying Chu. Then, after saying Bismillah, I realized that what they said was only too true. No one can erase what fate has decreed. Um, Forget 4 rupees. There weren't even 4 paise in my bag. Just a few textbooks and notebooks, one pencil, one sharpener, one ID card my mamu had sent me last ID. Okay, I felt wait. shaken. हाँ, तो after the prayer I offered namaz. Now he is sitting for the prayer na. Now he is afraid if he doesn't get 4 rupees, then he will be punished in the school as well as mummy papa will scold him, है ना. So after the prayer recited, chanting and reciting. प्रेयर को हम रिसाइट करते हैं ना, पढ़ते नहीं है कि उसको क्या करते हैं, चांटिंग करते हैं. जैसे कि मंदिर में देखो सुनोगे कभी कभी अल्लाह अकबर जो प्रेयर होता है वो चांटिंग होता है, रिसाइट होता है ना. recited. Okay, after the prayer I offered namaz, recited 10 surats, ayat all khushi, kalma, yatyab. In fact, everything that I remembered. So, whatever prayer he knows, that small boy, whatever prayers he knows, he is going on reciting, going on saying that prayer. Please give 4 rupees in my bag. So all these Quran prayers, whatever prayers are written in that Quran, he is reciting. Okay. In fact, everything that I remember. Then I blew over my bag, saying choke. Then, after saying Bismillah, I realized that what they said was only too true. No one can erase what fact has decreed. So he says that after prayer वो क्या करता है, दौड़ के जाते हैं. फिर what he says is he checks his bag. ओके, वो चेकआउट करता है अपना बैग को, तो वो कुछ भी उन पे नहीं दिखाई देता है. फॉरगेट 4 रुपीज. 4 रुपीज के बारे तो भूल ही जाओ. देर वॉजेंट इवन 4 पैसे इन माई बैग. अब बेचारा देखो दौड़ के जाता है प्रेयर के बाद और अपना बैग चेक करता है और देखता है कि कहीं अल्लाह मियाँ गॉड तो पैसे तो नहीं डाल दिया. तो जब वो देखता है तो कुछ भी नहीं रहता है. नॉट इवन 4 पैसे. 4 रुपीज का तो बात ही छोड़ो, 4 पैसे भी वहाँ पे नहीं था. जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, वन पेंसिल, वन sharpeners, one ID card my mamu had sent me last ID. So only he could find only textbook, notebook, and a pencil and sharpener and ID. Only that he could find, nothing else. Instead of 4 rupees, he could find only books, copies, pencil, sharpener, and ID. Nothing else. Next. I I felt felt like like crying. crying. I felt like crying as loudly as I could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home. Tired and defeated, I got up from there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring, so that when the children came I too would walk home with them as if I had come straight from school. Okay. I felt like crying. Now, after seeing his bag, he was very upset. He felt like crying loudly. But then I remembered that school must have ended. School have ended
जो स्कूल ओवर हो चुका है ना, हॉलीडे हो गया, एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम। और ये सोच रहा है कि अब तो स्कूल से बंक मार के आया है, लेकिन क्या है ना, अभी तो टाइम हो गया होगा छुट्टी का, अभी छुट्टी हो चुका होगा और बच्चे भी चले गए होंगे, रास्ते पे होंगे। Tired and defeated, I got up from there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring, so that when the children came out, I too would walk home with them as if I had come straight from school. So now he is thinking that he will go back to that bazaar near the school, and whenever school bell will ring, he will go to his house as though he had gone for the classes, है ना? किसी को पता नहीं चलेगा कि वो स्कूल गया था या नहीं गया था. So now he is thinking that now he will go to that bazaar and he will sit over there. He will sit there and he will wait for that last bell to be rang. Um, I didn't even I didn't even realize that I was standing near the jalebi wala's shop. Suddenly, the halwai called out, "Kyun bhai? Shalai huye rupees what? Don't want jalebis today?" Okay, now that jalebi wala teasing him, na? I did not know, or did not know. He did not know, or he didn't realize also that he was standing near that halwai wala. Halwai wala means that same fellow who from whom he had bought that jalebis previous day, है ना? So he did not know, and just he was standing, and suddenly that halwai wala called out to him, that jalebi who was selling that jalebi, he called out him, क्यों भाई, आज जलेबी नहीं खरीदोगे क्या? कल तो बहुत खरीद लिया था. What happened today? Why you are not buying? ले लो, क्या मैं आपको मतलब मेजरमेंट करके दे दूं या वे करके दे दूं आपको, कितना चाहिए है? Like that he was teasing him, है ना? Mm, I I felt. felt I felt like saying, "I won't eat your jalebis today, but I'd sure like to roast your liver and eat that instead." I wasn't feeling too well that day, so I simply moved away. हाँ. Now he got very angry, है ना? Why he got very angry? That हलवाई वाला is teasing him, है ना? वो हलवाई वाला उनको चिढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्यों भाई आज जलेबी नहीं खाओगे? हो गया, कल ही बहुत खा लिया ना, इसलिए आज जलेबी नहीं खाओगे क्या? So that fellow was, this small boy was very much annoyed, and he was saying inside his heart and mind that I won't eat jalebi today. I want to roast your liver. लिवर को रोस्ट करके खाऊंगा, बिकॉज ही वॉज वेरी एंग्री ना, अनोइड. इसलिए वो बोलता है कि मैं आपके जलेबी नहीं खाने वाला हूँ, आपके लीवर खाने वाला हूँ, है ना? बट आई वॉजंट फील टू वेल दैट डे, सो आई सिंपली मूव्ड अवे. लेकिन वो उस दिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था, ही वॉज नॉट फीलिंग गुड, सो ही जस्ट लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग टू दैट हलवाई वाला. The next day, I did the same thing. I got dressed and left home, went up to the school gate, and then turned off to the railway station. Under the same tree, I sat and began to say the same prayer. I repeatedly pleaded, "Allah Mia, at least give it to me today. Today is the second day." Okay, the next day I did the same thing. He is going on praying to God for the help. He is seeking help from God. I got dressed and left home. Okay, he dressed up and he left for home. Went up to the school gate. अभी स्कूल जाने जैसा क्या है, वो ड्रेसअप हो गया और स्कूल गेट तक गया, एंड देन रिटर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन. देन अगेन ही turned his face and he moved towards the railway station. Under the same tree, I sat and began to say the same prayers. Same prayers he said under that same tree. I repeatedly pleaded. Repeatedly pleaded means बार बार उसी चीज को दोहराना, है ना? Allah Mia, at least give me or give it to me today. Today is the second day.
अलामिया को बोलता है कि फर्स्ट डे तो यू डिड नॉट गिव मी, आप मुझे फर्स्ट डे को नहीं दिया, लेकिन कम से कम सेकंड डे को तो दे दो, प्लीज हेल्प मी आउट। फर्स्ट डे यू कुड नॉट हेल्प, बट एट लीस्ट टुडे यू हेल्प मी। Today is the second day, so please God, Allah Mia, help me out, otherwise there is no chance to escape from my parents. Surely I will get the beating. Then he said, "All right, come, let's play a game. I will go from here to that signal. You secretly place 4 rupees under this big rock. I will touch the signal and come back. What fun it will be if I pick up the rock and find 4 rupees underneath. So, are you ready? I'm going to watch the signal. 1, 2, 3. Okay, now he is saying that we will play a game. भगवान से प्रे कर रहे हैं, प्रे करते करते थक गए, तो वो बोल रहे हैं कि अरे चलो, प्रेयर तो नहीं सुन रहे हो ना, कम से कम हम अभी गेम खेलेंगे ना। देन आई सेड ऑल राइट, कम लेट्स प्ले अ गेम। चलो हम एक गेम खेलते हैं, जो कि जब मैं वहां पर क्या है, दौड़ के जाऊंगा वो सिग्नल तक, और जब मैं वापस आऊंगा तो आप एक पत्थर के नीचे 4 रुपीज छिपा देना, और आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। अब जब तक मैं वो सिग्नल को टच करके वापस आऊंगा, तब तक आप 4 रुपीज वो पत्थर के नीचे छिपा देना। देन व्हाट फन इट विल बी इफ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज अंडरनेथ। तो क्या मतलब बहुत ग्रेट फन होगा हमारे दोनों के बीच में, यदि मैं वापस आके वो पत्थर को उठाऊंगा एंड उस पत्थर के नीचे 4 रुपीज होगा, तो व्हाट ए वंडरफुल इट विल बी, एंड इट विल बी वेरी fantastic time for me, or I will be very happy to see that 4 rupees. So are you ready? I am going towards the signal. 1, 2, 3. So now he is playing himself. He is saying that, so भगवान आप रेडी हो इस गेम खेलने के लिए, तो चलो खेलते हैं। 1, 2, 3 बोलकर वो सिग्नल तक चले जाते हैं, दौड़कर चले जाते हैं। I went up to the returned, smiling, but I could not find the courage to pick up the rock. What if the coins were not there? But then I thought, what if they were? Okay. When I went up to the signal, he ran to that signal place and returned. Again he came back smilingly, है ना? वो बहुत अच्छे से स्माइल करते वापस आ रहा है। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक। लेकिन उसको साहस नहीं है ना, करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उस पत्थर को उठा के देखने के लिए। व्हाट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर। और वो सोचने लग गया, यदि कोइंस नहीं होगा तो क्या होगा, मे बी गॉड वहां पे छिपाए होंगे कि नहीं छिपाए होंगे। देन अगेन आई विल बी अपसेट। सो ही वॉज थिंकिंग दैट वे कि यदि वहां पे कोइंस नहीं होगा तो आई विल बी वेरी मच अपसेट अगेन। बट देन आई थॉट, व्हाट इफ देयर वर, क्या पता वहां पे अलामिया ने पैसे की जगह पे कुछ और छिपाया होगा, या तो वो कुछ भी नहीं छिपाया होगा। So we cannot say, because Alamia God is not visible. So this boy is thinking that could be possible he will give or he will not give. So what I will do, I don't know. So this boy is very much upset now. He is coming from that signal place smilingly, but suddenly his face changed and he became sad.